हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सबने खाने के साथ पानी तो ज़रूर पिया होगा। इन बिटवीन द क्लासेस भी आपको प्यास लगी होगी। वाटर इज समथिंग दैट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट। येट human beings waste so much of water in so many different ways. In this chapter, we are going to specifically focus on the importance of conservation of water. This is because although when you see the earth from the sky, you see that the earth is a blue planet. It is covered with water all around. But the amount of water that can actually be used by human beings is very less. That is the reason it is important that we become wise enough to use water judiciously. So in this chapter, we are going to first learn the importance of water. हम सबको पता है कि वाटर ह्यूमन बींग्स के लिए कितने सारे काम करता है. इट इज़ नॉट जस्ट ड्रिंकिंग, इट इज़ ऑल्सो क्लीनिंग, वॉशिंग, cooking, etc. that we use water for. Animals also need water to drink and to bathe. Plants too cannot survive without water. They use this water during photosynthesis to produce their food. अगर ये पानी नहीं होगा तो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कैसे करेंगे, और प्लांट्स फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या खाएंगे. दैट इज द रीजन वाटर बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ life. Water has industrial uses also, and water has transport uses also. So in totality, human life entirely depends on water. Now let us just review the uses of water. We know that we use water in our homes for cooking, cleaning and washing. We also use water in agriculture for growing crops. In industries, it is used in the processing and manufacturing of glassware, plasticware, etc. Water that is stored in dams is used to produce electricity. This electricity is known as hydroelectricity. Water is also used for recreation, as we see when we go out for playing in adventure water parks or we go out for boating. Now, what is the need for water conservation? We are going to understand this with the help of a short video. We all know that the earth is a blue planet. It is covered with water all around. But of this water, only a little amount is available as usable water, which is only 2.7%. Because of the rising population, forests are being cleared to make space for cities, malls, etc. because of which the water is not able to seep under the ground, because of which the groundwater level is slowly and steadily falling off. We can see people standing in queues, long queues, waiting for their turn to get water. This is the reason we need to conserve water. Now, the means for conserving water are, first is रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इंडिया में बहुत बारिश होती है. मॉनसून सीजन के ऊपर फार्मर्स भी डिपेंड करते हैं कि मॉनसून आएगा तो उनकी फील्ड्स को पानी मिलेगा. ये मॉनसून कभी कभी फ्लड में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज द रेन इज सो एक्सेसिव. इस एक्सेस रेन वाटर को हमको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में घरों के नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना दिया जाता है एंड ऑल दिस रेन वाटर इज अलाउड टू कलेक्ट इन दैट अंडरग्राउंड टैंक, सो दैट जो ड्राई सीजन होता है उसके अंदर द सेम रेन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस. अनदर वे ऑफ हार्वेस्टिंग द वाटर इज बाय चेक डैम्स. रेन की वजह से रिवर्स में फ्लड्स आ जाते हैं, लेकिन अगर डैम्स बनेंगे तो रिवर वाटर डैम के अंदर कलेक्ट होता रहेगा. दिस वाटर इन द डैम्स इज नॉट ओनली यूज्ड टू वाटर द फील्ड्स, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो इन दीज वेज वी कैन कंजर्व वाटर. ऑल्सो घर में ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे फॉलो करनी चाहिए सो दैट वी आर एबल टू कंजर्व वाटर. फर्स्ट, डू नॉट लेट टैप्स ड्रिप. कहीं पे भी वाटर की वेस्टेज हो रही हो तो उसको इमीडिएटली चेक करवाइए. यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शावर.
whether it is to wash your house or it is to wash your car or watering the plants. Do not throw the water from your bottles here and there. Use that water to water the plants. Using these basic habits, you can make a lot of difference. So in this chapter, we have learned the importance of conservation of water. We have also learned the different ways of conservation of water. So I'm sure all of you are going to follow all these habits and become responsible citizens. Thank you.